देंगे, आपने वो प्लांट जिसका घर में किचन गार्डनिंग हो सके वहाँ लगा दें, जो छत पे लगा सके। तो क्या बेटो आप मुझसे ये वादा करते हो? सब लोग सब हाथ खड़े करके कहिए। ये आज जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, ये पहला प्रोग्राम होगा पूरे पंजाब में। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हर स्कूल, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, हर मदरसा, हर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, वोकेशनल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, हमने एक एमरजेंसी बुनियादों पे ये काम करना है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक हमारे यहाँ बढ़ गई है। आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी आने वाली जनरेशन में 2050 में सिलेंडर लगा के घूम रहे हो, कोई भी नहीं ना चाहता, और कोई सिलेंडर जो है उस कोस्ट को अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है हमारी जो है जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन का पार्ट बने और जो मैक्सिमम है ट्री प्लांटेशन करें। आपको पता है कि टर्की में हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे एक कबीला है जहाँ पे जब बेटी पैदा होती है तो वो उसके नाम का पौधा लगाते हैं सारे कबीले के लोग। तो ये कितनी अच्छी एक उनकी रस्म है। और मैं चाहती हूँ कि हम जो है in order to basically bring back Pakistan where it used to be 20 to 30 years ago. From today on, we are expected to move that number by 2030 to 1 billion trees. Can you imagine 1 billion trees put in Punjab, what it would look like? I'm going to give you an example. यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका मैं बहुत दिल के साथ मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ख़ास मौजू के ऊपर यहाँ पर हमारे बच्चों को आगाही दी। और इंशाल्लाह हमारे बच्चे और हम सब साथ मिलकर इस आफत को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे जो सेंसिस होते हैं उसके मुताबिक जो मेरी बेटियां और मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं कि लाहौर में जो है वो खाना शुमारी के मुताबिक 42 लाख के करीब लाहौर में घर हैं। जो घर हैं हमारे 42 लाख के लगभग हैं, और जो पॉपुलेशन है वो 125 लाख से ज़्यादा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, लेट ए वन प्लांट इन ईच एंड एवरी होम। एक इस मिशन इसको हम कम करने के लिए इस चीज़ का हेल्प करें कि हम जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम इस पूरे कॉलेज में जिसकी तादाद कोई 7000 के करीब है, हम आपको अपनी जो NGO हैं, अल खिदमत, छाँव और ग्लोबल वार्मिंग, और ये जो हमारी जो कितनी NGOs हैं, PHA के ताउन से, एनवायरनमेंट के ताउन से, हम आने वाले दिनों में आपको यहाँ स्कूल में प्लांट देंगे। आपने वो प्लांट जिसका घर में किचन गार्डनिंग हो सके वहाँ लगा दें, जो छत पे लगा सके। तो क्या बेटो आप मुझसे ये वादा करते हो? सब लोग सब हाथ खड़े करके कहिए। ये आज जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, ये पहला प्रोग्राम होगा पूरे पंजाब में। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हर स्कूल, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, हर मदरसा, हर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, वोकेशनल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, हमने एक एमरजेंसी बुनियादों पे ये काम करना है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक हमारे यहाँ बढ़ गई है कि शहर लाहौर का जो हुस्न है वो बर्बाद हो गया। तो उसको हमने कंट्रोल किसी और ने नहीं करना। जितनी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, वो नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने आप को ठीक ना करूँ। इस वक्त हमारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बेइंतहा काम कर रहा है, हमारे PHA वाले कर रहे हैं, वासा कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो इस कोशिश में नहीं लगा हुआ। मगर मैं आपसे कहूँगा कि जब तक हम सब मिलके इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये तो हम ये करेंगे कि जो आज जैसे आपके कॉलेज में 7000 स्टूडेंट्स हैं, पूरे पंजाब में हम फी स्टूडेंट पर प्लांट, इसकी बुनियाद पे हम आने वाले वक्त में इस प्लान को आप आगे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है इससे जो है वो इसमें कमी आएगी। दूसरी मैं आपके सामने बात रखूँगा कि मुझसे पहले मुकर्रर ने कहा, अमीर मालिक साहब ने, PDM के बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं, कि हमारी एक ऐप है सेंस। आपने सब ने, हर कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने उसको करनी है। जहाँ देखें
उस ऐप में आप अपना वो भिजवा दें, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आखिर में, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, बहुत बातें करने वाली थी, मैं आप सब हजरात का, अपने बेटों बेटियों का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, प्रिंसिपल साहबान का, हमारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। WPM फाउंडेशन से मैं जो वाबस्ता हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी हमारे मेंबर बने। आप किस तरह बन सकते हैं? ट्री प्लांटेशन कैंपेन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। फ्री ऑफ प्लांट हम आपको प्रोवाइड। आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी आने वाली जनरेशन में 2050 में सिलेंडर लगा के घूम रहे हो, कोई भी नहीं ना चाहता, और कोई सिलेंडर जो है उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है हमारी जो है जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन का पार्ट बने और जो मैक्सिमम है ट्री प्लांटेशन करें। आपको पता है कि टर्की में, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे एक कबीला है जहाँ पे जब बेटी पैदा होती है तो वो उसके नाम का पौधा लगाते हैं सारे कबीले के लोग। तो ये कितनी अच्छी एक उनकी रस्म है। और मैं चाहती हूँ कि हम जो है यहाँ की आने वाली जनरेशन एक साफ सुथरे फिजा में परवान करें। उनके लिए हमें आज ही पौधे लगाने पड़ेंगे। और जो है आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों नहीं आप एक खूबसूरत सा पौधा गिफ्ट करते हैं? पौधे तो सारे खूबसूरत होते हैं। तो हमें अपने जो कल्चरल ट्रीज हैं जिन पे हमारे परिंदे आके बैठते हैं, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। टाली जो है, कीचड़, टाली, कचनार, जामुन, इनको प्रमोट करना चाहिए। तो क्या हम इस साथ अहद करते हैं? अगले साल जो है हमें स्मोक का खात्मा जो है हमें नहीं चाहिए, स्मोक किसी को भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि जो है आजकल हर किसी को खांसी है, नज़ला जुकाम है, क्यों है? ये इस वजह से है। हमें आज ही जो है ना उसका बीज बोना पड़ेगा, मैक्सिमम प्लांटेशन करनी पड़ेगी, दरख्त लगाने पड़ेंगे। लाहौर को जो है इसका लाइफ, जो लाहौर में रहता है, मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि 2.5 ईयर लाइफ स्पैन खत्म उसका कम हो रहा है एक इंसान का जो लाहौर में सांस ले रहे हैं। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, अब नाउ इट्स अ सिटी ऑफ कंक्रीट। हमें इसे दोबारा सिटी ऑफ गार्डन्स बनाना है और इसमें मुझे आप सबका जो है साथ चाहिए। ये प्लांटेशन का सीजन आएगा, मैं यहाँ पर आके खुद प्लांट्स लगाऊंगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स प्रोवाइड करूँगी। अगर दिल करे आप छत पे लगाएं, आपके पास जगह नहीं है, कोई भी पोर्ट है उस पर लगाएं, लेकिन प्लांट ज़रूर लगाएं और बच्चों को अवेयरनेस दें, छोटे बच्चों को अपने मोहल्ले में दें ताकि लोगों को आगाही हो। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल जब मैं यहाँ पर आऊँ तो इस तरह की मुझे यहाँ पे ग्रीनरी नजर आए और स्टूडेंट इससे भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो। थैंक यू सो मच। My name is Dr. Sarjul Khan. I work for the United Nations in water conservation. I'm an observer sent by the United Nations to represent Pakistan on a global scale. So I also work with the University of Lahore and implementing basically the 17 SDG goals that the United Nations has set. Now, if I'm speaking too fast, somebody raise your hand and I'll slow down and maybe speak a little bit Urdu, if possible, okay? In order to basically bring back Pakistan where it used to be 20 to 30 years ago. From today on, we are expected to move that number by 2030 to 1 billion trees. Can you imagine 1 billion trees put in Punjab, what it would look like? I'm going to give you an example. Lahore University itself is facing smog challenges, it's facing different areas of decline that we're basically noticing. We're dedicated for advancing sustainable solutions by lowering collective carbon footprint. Our mission aligns closely with the sustainable development for the SDG 13 and the 15. What Lahore looks like today, the UN predicts Lahore to look like this within the next 20 years. And you can see a stark difference. This is the AQI of every single region that I pulled up as of today, meaning as of right now where you're sitting, you can actually see what the air quality is in your region. And if you notice the stark difference, some regions are in the 3s, some regions are in the 4s, some regions are in 5s, but overall, consistently, we've actually monitored the AQI to be above 1,000 in Lahore.
So that is substantially dangerous for you guys to be actually walking around in. Everybody should be wearing a mask or covering their face. When you hit the threshold of 1,000 parts per million, it's equivalent to smoking 3 packs of cigarettes a day if you're a non-smoker. Next. I'm going to give you a stark difference here. Here is a local community, which all of you guys basically are probably associated or coming from. This is the AQI of your area. Let's say you're coming from Kent area, you're coming from Defense, you're coming from Khabe Mean or anywhere else. The AQI is listed there. The picture next to that is the air quality in Detroit, Michigan. Detroit, Michigan is considered to be the world's largest manufacturer of vehicles. So we have a lot of problems with air quality there, but our air quality is substantially lower than what you see here. So industrial pollution and stubble burning are the main causes of the problems you're seeing today. Next. Carbon footprint reduction, basically. The University of Lahore basically has embarked has basically impacted itself into projects aiming to reduce carbon emissions across the board and beyond. Our ongoing journey to becoming carbon net zero, the first university in Lahore or Pakistan, involves basically integrating renewable energy. We've started expanding our power grids, the energy, particularly the solar power at the University of Lahore is adapting new and efficient systems. Our solar power project by 2030 should be making roughly six or above megawatts of energy, making the university basically carbon net zero, taking any energy off the grid. You guys would make a difference. Next. Just go to next. The university and the United Nations is committed to basically pioneer initiatives at the Lahore University, air quality. Our plantations, our renewable energy projects are all part of the Shah Foundation and the commitment to the SDG goals. We are actively working towards the future. Together, we can combat smoke and create a healthier and better future for future generations all to come. Thank you. मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर मुलतमिस हूँ प्रिंसिपल गवर्नमेंट अमी ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जावेद मलिक से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से ख़यालात का इजहार फरमाते हुए तकरीब के मुंतज़मीन, हाज़रीन और मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बस आखिरी मिनट के लिए आप लोग ज़रा तशरीफ़ रखें। यह प्रोग्राम मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि काफ़ी लंबा हो गया है, प्रोग्राम हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मैं इस मौजू के ऊपर ये सेमिनार मुनक़्क़िद करवाने पर जनाब चौधरी साहब का और कमाल हैदरी साहब का और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका मैं बहुत दिल के साथ मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ख़ास मौजू के ऊपर यहाँ पर हमारे बच्चों को आगाही दी और इंशाअल्लाह हमारे बच्चे और हम सब साथ मिलकर इस आफत को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आप लोगों को आई होप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज का सेमिनार समझ में आया है तो प्लीज़ स्मोक के ख़ात्मे के लिए दरख्त उगाएं, ठीक हो गया। और इसी के साथ इस सेमिनार को आगे से शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।